Good afternoon, dear students. I am Pratibha Rani Barik, Junior Lecturer in History, Revensa Junior College. I am going to discuss about events leading to the formation of the province of Odisha. In this class, we are going to discuss about how our Odisha province was formed, what efforts were done by our great persons of Odisha like Madhusudan Das, and in this class we will discuss about the formation of different committees who played a vital role for the formation of Odisha. तो आजिर क्लास रे आमे किपरि भाबरे ओडिशा प्रदेश गठन करागला से विषय आलोचना करिबा। तो एथिपाई आमर ओडिशार बरपुत्र मानकर जो उद्यम थिला ओडिशा को एक स्वतंत्र प्रदेश रो परिचय से माने देई पारिथिले, सेमानकर उद्यम जगु आमे आज स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश रे ओडिशावासी बोली जो गर्व अनुभव करुछे। तो ये ओडिशा प्रदेश जहाँ खंड विखंडित करा जाइथिला एवं केंद्रीय प्रदेश मद्रास प्रेसिडेंसी ए सब सहित ताको मिसाई दिया जाइथिला। सही प्रदेश रु किपरि ओडिया भाषा भाषी अंचल को अना जाय पुनश्च ताको एक स्वतंत्र प्रदेश रो परिचय दिया गला। सही विषय आमे आलोचना विल डिस्कस अबाउट हाउ द ओडिया स्पीकिंग ट्रैक्ट्स वर अमालगमेटेड इनटू a province which is called as Odisha province. So, in this class I am going to discuss about this. In the first slide, the formation of separate Odisha province is a landmark in the modern history of this land. The fragmented Odia speaking tracts which remained in Bihar, Madras, Bengal presidency and central province were at last united and the separate province of Odisha was formed on 1st April 1936. आमर स्वतंत्र ओडिशा एक स्वतंत्र प्रदेश रो मान्यता 1936 मसीहा 1 एप्रिल रे पाइथिला। तो ये जो ओडिशा प्रदेश गठन करा गला पूर्वरु ताहा खंड विखंडित होई विभिन्न राज्य सहित मिश्रित जमती बिहार, मद्रास, केंद्रीय प्रदेश जमती कि गंजाम को सदर्न मद्रास प्रेसिडेंसी सहित मिसा जाइथिला। तो बिहार प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, देन सेंट्रल प्रोविंसेस ए सबु अंचल ओडिशा भाषाभाषी अंचल को एक पुणी थरे एकत्रित करा जाई ओडिशा प्रदेश गठन करा गला। With the British occupation of Odisha in 1803, the far flung medieval Odisha empire came to an end. In due course of time, Sambalpur remained a part of central provinces, Ganjam became a part of Madras presidency, Midnapur was tied with Bengal presidency and Odia speaking areas of Singhbhumi remained as the part of Bihar Chotnagpur division. When Kantilal Bhattacharya he spoke bluntly that Odia is not a separate language, Odia एक स्वतंत्र भाषा नय. Then Fakir Mohan opposed it vehemently. Radhanath Rai and Gauri Shankar Rai also raised voice against it. जेतेबेले ओडिया भाषा को लेकी स्वर उत्तोलन करा जाइथिला ओडिया भाषाभाषी लोक मानकर किपरि भाबरे हमर भाषा को से माने लोप करबा को बसिथिले से भाषा आंदोलन रु आरंभ होइथिला ओडिशा प्रदेश गठनर प्रयास किपरि भाबरे से माने ओडिया भाषा को सुरक्षा देबे एवं ओडिया भाषाभाषी समस्त अंचल को एकत्रित करी ओडिशा प्रदेश गठन करिवे से मानकर मुख्य लक्ष्य थिला। तो संबलपुर रे हिंदी भाषा को अधिक गुरुत्व दे जाउथिला। देन गंजाम एवं विभिन्न आम ओडिशार अन्य सब अंचल रे मध्य ओडिया भाषा संकटर सम्मुखीन होइतिला। तो से पूर्व क्लास रे आमे जोटा आलोचना करथिले जे किपरि ओडिया भाषा विभिन्न संकटर सम्मुखीन होइतिला एवं परवर्ती समय रे ओडिया भाषा को स्वतंत्र भाषार परिचय मिलिथिला। तो से ओडिया भाषा आंदोलन किपरि भाबरे ओडिशा प्रदेश गठन रे सहायक होइतिला सही विषय रे आमे आलोचना करिबा। तो कांतिलाल भट्टाचार्य कहले ओडिया एक स्वतंत्र भाषा नय, ओडिया स्वतंत्र भाषा नुहे, ताहले ओडिशा प्रदेश गठनर प्रश्न ही उठुनी। तो ओडिशा प्रदेश गठन करिबा पई सेतेबेले ओडिया भाषार उन्नति अत्यावश्यक थिला। सेथि पई हमर लिटरेरी एक्टिविटीज बा साहित्यर अधिक किपरि भाबरे ओडिया साहित्यर प्रसार करा जिवो सेथि पई मध्य बहुत लेखा प्रकाशन करा गला। विभिन्न स्थान रे प्रिंटिंग प्रेस सब प्रतिष्ठा करा गला जहाँ फल कि ओडिया भाषा किपरि समृद्ध करा जाई परिबो एवं ताको आधार करी ओडिशा प्रदेश गठन करा जाई परिबो सेही दिगरे आमर महामनीषी माने
चेष्टा करथिले. While the Odias of Cuttack, Puri and Baleshwar felt harassed by the Bengalis in Ganjam, their counterparts felt in the similar way against the Telugus. The Odias of Ganjam resented the introduction of Telugu language and dominance of Telugus in government services. In September 1870, they held a meeting at Raselkonda, Bhanjanagar and appealed to the Odias of the Odisha division to carry an movement for the unification of Odia speaking areas. The Cuttack, Puri, Baleshwar रे समस्त ओडिया माने बेंगली मानकर बा बंग भाषा शिखिबा पई सेमानकु बाध्य करा गला. सेमाने बंग भाषा किपरि भाबरे अधिक प्रसार बा सेमाने जेहेतु बंग भाषा रे पुस्तक बहुत परिमाण रे मिलुथिला तेनु बंग भाषा को अधिक गुरुत्व दे जाइथिला. जेते बेले कोनोसी सरकारी चाकरी रे नियुक्ति प्रदान करला बेंगली मानकु अधिक मात्रा नियुक्ति प्रदान करा जाउथिला ओडिया मानक परिवर्ते. तो यह द्वारा कटक, पुरी एवं बालेश्वर रे ओडिया मानकु विभिन्न प्रकार प्रतारणर शिकार होगा पड़ता से शोषण करा जाउथिला. सेमानकर अर्थनैतिक अभिवृद्धि होई पारु नथिला. तेणु ओडिया माने विभिन्न समस्यार सम्मुखीन होथिले. सेमिति गंजाम रे मध्य तेलुगु मानकर प्रादुर्भाव अधिक रहितला. तेलुगु भाषा सेमानकु शिक्षा करिया पई अधिक बाध्य करा गला एवं तांकर जते सरकारी चाकरी थिला से सबुथिरे ओडिया मानक परिवर्ते तेलुगु मानकु नियुक्ति प्रदान करा जाउथिला. जहा फल कि सेमान ए जो भाषा आंदोलन आरंभ हैला एवं ए जो भाषा आंदोलन को आधार करी किपरि भाबरे ओडिया भाषा को बंचाई रखबे ओडिशा बा ओडिया भाषाभाषी समस्त अंचल को एकत्र करी ओडिशा प्रदेश गठन करा जिवो सेथि पई प्रचेष्टा आरंभ हैला. इन सेप्टेम्बर 1870 they held a meeting at Raselkonda of Bhanjanagar and appealed to the Odias of the Odisha division to carry a movement for the unification of Odia speaking areas. जत्ते सब ओडिया भाषाभाषी अंचल अछंती समस्ते किपरि भाबरे एकत्रित होई एक स्वतंत्र प्रदेश गठन करबे एक स्वतंत्र अंचल माने प्रतिष्ठा करिवे. सेथि पई से माने विभिन्न पदक्षेप नेबा पई चेष्टा करथिले. 1870 मसिया सेप्टेम्बर मासरे रोसेलकोंडा ठारे भंजनगर एक सभार से आयोजन करथिले एवं समस्त ओडिया मानकु सेठारे एकत्रित करी किपरि भाबे तांको ओडिया जातीयता भाव सृष्टि करथिले. किपरि भाबे ओडिया जाति को बंचई रखा जिवो ओडिया भाषा को बंचई रखा जिवो. In 1875, Raja Shyamananda De, a Jamidar of Baleshwar, sent a petition to the government for the amalgamation of all Odia speaking areas. तो एथिबे जो प्रयास आरंभ होला प्रथमे 1875 मसीह राजा श्यामानंद दे जे कि बालेश्वर जने जमीदार थिले से सरकार को एक पिटिशन देथिले जे किपरि भाबरे समस्त ओडिया भाषाभाषी अंचल को एकत्रित करा जबो किपरि ओडिया भाषाभाषी लोक माने एक स्थान रे बसवास करिवे एक स्वतंत्र अंचल रे. देन इन 1882 उत्कल सभा वाज ऑर्गेनाइज्ड एट कटक. दिस एसोसिएशन held discussions on various national problems like self government, Ilwat Bill and representation in the legislative councils. It thanked the Viceroy Lord Ripon for introducing the local self government. In 1882 1882 मसीह जेतबे उत्कल सभा प्रतिष्ठा कला इट वाज ऑर्गेनाइज्ड एट कटक. सेमानकर मुख्य उद्देश्य रहिला सेमाने कोन दे डिस्कस्ड अबाउट डिफरेंट प्रॉब्लम्स नेशनल प्रॉब्लम्स एज वेल एज रीजनल प्रॉब्लम्स वर डिस्कस्ड हियर and they were supporters of the British administration. सेमाने मध्य इंग्रेज सरकार को शासन को पूर्ण समर्थन करुथिले and they had the faith that the British government will provide them every justice. तांको समस्त प्रकार न्याय इंग्रेज सरकार प्रदान करिवे and the Britishers they will also help them to establish a separate province in India. भारत रे एक स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन करिबारे इंग्रेज सरकार ही सेमानको सहायता प्रदान and they supported the Britishers. से माने एथिबे पूर्ण समर्थन प्रदान करुथिले जे इंग्रेज मानक साधारणतः जो उत्कल सभा हेउ बा उत्कल यूनियन कॉन्फ्रेंस उत्कल सम्मेलन हेउ the elite persons they were the members of this organization, this association, and they wanted to create an atmosphere in which the British will believe them and they will provide them every type of demand which they will arise before the government. And as they were the elite persons, they were the jamindars, they were the literate persons, and especially they were aristocratic persons, and it was not a mass organization of the mass. So the Britishers they also supported these people. So this association held discussions on various national problems as well as regional problems,
एंड लाइक सेल्फ गवर्नमेंट इलबर्ट बिल जोटा कि आम सब विभिन्न प्रकार लेजिस्लेटिव काउंसिल रो जहाँ सब रिप्रेजेंटेशन थिला ताकू मध्ये से माने डिस्कशन करूथिले. They also thanked the Viceroy Lord Ripon for introducing the local self-government. Then Madhusudan Das. Madhusudan Das was the first lawyer of Odisha, joined the Cuttack bar in 1881. 1881 मसीह मधुसूदन दास जे कि हमर ओडिसा होचंती प्रथम आईन जे होचंती वकिलती व्यवसाय करिथिले से जॉइंड द कटक बार रे से 1881 रे joined kale and associated himself with this association. The Utkal Sabha concerned itself both with the national problems as well as the problems of Odias. Then in November 1885, when Sir Richard Thompson, the Lieutenant Governor of Bengal, visited Odisha, the Utkal Sabha gave a memorandum to him demanding the merger of Sambalpur and Ganjam with the Odisha division. Bongoro governor, Lieutenant Governor रिचर्ड थॉम्पसन जो 1885 मसीह ओडिशा परिदर्शन से आसी उत्कल सभा गोटे मेमोरेंडम प्रदान करथिला एवं संबलपुर एवं गंजाम को ओडिशा डिवीजन सहित मिश्रण करने प्रस्ताव देथिले. दे डिमांडेड द मर्जर ऑफ गंजाम एंड संबलपुर विथ द ओडिशा डिवीजन. तो सेमानकर प्रथम प्रश्न किपरि भाव में ओडिया भाषाभाषी अंचल जमती गंजाम रे बहु संख्यक ओडिया रहउथिले, ओडिया भाषाभाषी जो माने कि माने शोषण शिकार होते. देन संबलपुर रे हिंदी भाषा को अधिक गुरुत्व दे जाउथिला, ओडिया भाषा सेठी लोप पाइबा अवस्था रे थिला. इंग्रेज माने गोटे आड़ देखौथिले जे किपरि संबलपुर रे हिंदी को बाध्यतामूलक करा जिवो. से माने कहउथिले कि जेतेबेले संबलपुर रे से माने कोनोसी सरकारी कर्मचारी को नियुक्ति प्रदान करिवे से माने जेहेतु हिंदी भाषाभाषी लोक हायर पोस्ट जो माने नियुक्त तो से माने समस्ते ये ओडिया भाषा ऑफिशियल लैंग्वेज करा जिवो से मानको असुविधा हेबो किपरि भाबरे प्रशासन क्षेत्र रे से माने सुपरिचालना करि परिबे नाही. सो दैट हिंदी शुड बी द ऑफिशियल लैंग्वेज इन संबलपुर. They demanded that the Britishers, they said that those persons who will be appointed as the officers in the government offices of Sambalpur, they should have they will face difficulties in providing better administration as they didn't know about Odia, and it will be better to provide Hindi as a education. It will be compulsory in primary level, so that the people of Sambalpur they should learn Hindi. से माने हिंदी पढ़िबा उचित, किंतु ऑफिसर्स माने जो माने सब नियुक्त होबे से माने जेहेतु हिंदी भाषाभाषी लोक से माननको किपरि भाबरे सुशासन प्रदान करियो सेथि पय ओडिया को ऑफिशियल लैंग्वेज करा जिवो नाही, ता परिवर्ते हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज करा जिवो, सो दैट द पीपल दे शुड हैव गिव अ टेस्ट ऑफ पासिंग हिंदी in order to get a job in the government offices. तो यह जो कौन है ना बहुत ओडिया से माने सरकारी चाकरी वंचित हेले, से माने सरकारी चाकरी पाई परिले नाही, आ ओडिया भाषा से संकटर सम्मुखीन है. सो यह पर कौन है ना जिते सब ओडिया माने थिले से माने ग्रीवांसेस जहाँ थिला से माने चाहिए किपरि भाबरे से भाषा को ओडिया भाषा को बंचाई रखा जिवो इंग्रेज मानक चक्रांतरू बा से अंचल रे हिंदी भाषा भाषी जो लोक मानक प्रभाव किपरि ओडिया भाषा को बंचाई रखा जिवो सेथि पई संबलपुर एवं गंजाम को ओडिशा डिवीजन रे मिसई दिया जिवो, जहाँ फल कि आउ कोनोसी प्रकार असुविधार सम्मुखीन हेबा को पड़िबो नाही. To the second session of the Indian National Congress in December 1886, the Utkal Sabha sent 4 delegates: Madhusudan Das, Golak Chandra Bose, Harivallabha Ghosh and Kalipada Banerjee. So Madhusudan Das was the harbinger of Congress ideas and activities in Odisha. He also tried to raise the question of amalgamation of Odia speaking areas in the forum of the Congress. जेतेबेले 1886 मसीहा डिसेम्बर मासरे कांग्रेस अधिवेशन हैला सेतेबेले उत्कल सभा 4 जन प्रतिनिधि को पठैथिले माने खिले मधुसूदन दास, गोलक चंद्र बोस, हरिवल्लभ घोष, देन कालीपद बनर्जी. तो मधुसूदन दास कांग्रेस र जते सब जहाँ सब चिंताधारा थिला कांग्रेस जो कार्यक्रम थिला सब किछि ओडिसा रे से प्रचलन ओडिसा रे ताको आसी प्रचलन करे. ही आल्सो ट्राइड टू रेज द क्वेश्चन ऑफ से मध्ये सेठारे कोन प्रश्न उठैथिले किपरि भाबरे ओडिया भाषाभाषी अंचल को एकत्रित से कांग्रेस रो फोरम रे से सही प्रश्न उठैथिले.
and he tried his level best how to form a separate Odisha province with the help of Congress. किपरि कांग्रेस सहायता रे से माने स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन करि परिबे. Then in November 1888, during the visit of Sir S.C. Belly, the Lieutenant Governor of Bengal to Odisha, the Utkal Sabha presented a memorial demanding the unification of Odia speaking territories. In his reply to the memorial, Belly toned down the demand. 1888 मसीह सार एससी बेली को जे कि बंगर लेफ्टिनेंट गवर्नर थिले उत्कल सभा एक मेमोरियल प्रेजेंट करथिले जो कि से ओडिया भाषाभाषी अंचल एकत्रित करने दाबी उपस्थापन करथिले किंतु ताको रिप्लाई जो से रिप्लाई कले बेली से दाबी को कौन प्रकार बस प्रत्याख्यान कर ही टर्न डाउन द डिमांड. एंड इन 1895 एस.जी. कुक द कमिश्नर ऑफ ओडिशा डिवीजन gave a suggestion for the merger of Sambalpur district. The tributary states of Patna, Sonpur, Redhakhol, Bamra and Kalahandi and the Ganjam district including the states of Kimidi and Ghumsar with the Odisha division. So, in the 1895 H.G. Cook who was the commissioner of Odisha division, he also suggested for the merger of Sambalpur district, the tributary state of Patna, these areas Sonpur, Redhakhol, Bamra, Kalahandi and the Ganjam district into the Odisha division. तो Odisha division रे विभिन्न आमर ओडिया भाषाभाषी अंचल जहाँ सब थिला जमती रेढ़ाखोल बामरा कलाहांडी पाटना समस्त अंचल को किपरि भाबरे सब ओडिया भाषाभाषी अंचल को एकत्रित ओडिशा डिविजन में मिसई दिया जिवो सेथिपाई मध्य 1895 मसीह प्रयास करा जायथिला सेमान मध्य चेष्टा करिथिले. Then in 1895 the chief commissioner of central provinces decided to introduce Hindi as the official language of Sambalpur district on the ground that it was not possible to post Hindi speaking officials in that district if Odia remained the official language and the government officials were required to pass the Hindi test. जोटा कि बर्तमान मु आलोचना कली किपरि भाव से माने हिंदी को अग्राधिकार हिंदी भाषा को अग्राधिकार देथिले हिंदी भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज करथिले जे जे भी गवर्नमेंट जॉब रे रहिबे बा सरकारी चाकरी रहिबे से माने को हिंदी टेस्ट दबा को पड़िबो एवं ओडिया भाषा हेले से माने को बहुत असुविधार सम्मुखीन होबा पड़िबो. सो दिस इज द cause which was shown by the Britishers in order to introduce Hindi language instead of Odia in different offices. Then the Sambalpur Hitaishini, published under the editorship of Nilamani Vidyaratna from Bamanda, played an important role in rousing the feelings of the people of Sambalpur against this measure. Sambalpur Hitaishini जो पत्रिका पब्लिश करा जाउथल नीलमणि विद्यारत्न को संपादन रे बामंडा रे से गुरुत्वपूर्ण भूमिका ए समय से गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण कले. से संबलपुर लोकों मध्य रे ओडिया भाषा प्रति ओडिया भाषा प्रेम सृष्टि कले. से चाहिए कि भाव में ओडिया भाषाभाषी मैंने एकत्रित हुंतु या विरुद्ध स्वर उत्तोलन करंतु ओडिया जातीयतावाद तांको भितर सृष्टि करथिले. तो जहाँ फल समस्त ओडिया भाषाभाषी से ही अंचल संबलपुर अंचल समस्त ओडिया किपरि भाव ताको विरोध करिवे. तो सेथिबाई से एक प्रमुख भूमिका ग्रहण कले. तांकर विभिन्न प्रकाशन करुଥିଲେ से पत्र पत्रिका तो जो से संपादन रे संपादक भाव में भूमिका गुरुत्वपूर्ण थिला. Then in June 1895 a memorial against the imposition of Hindi on the Sambalpur people by the central province government signed by 3000 people was sent to the Viceroy Lord Elgin. 1895 मसीह संबलपुर भाषाभाषी लोक माने संबलपुर ओडिया भाषाभाषी लोक माने तांकर 3000 लोकंकर दस्तखत दे से माने लॉर्ड एल्जिन जे कि भाइसरॉय थिले तांकर निकट को एक मेमोरियल पठै थिले जोंथरे कि तांकर दाबी थिला सेमान को हिंदी शिक्षा कर बाध्य न करा जाऊ सेमान को ओडिया भाषा को सुरक्षा प्रदान कर. दे शुड लर्न ओडिया as they were ओडिया they have to learn ओडिया not Hindi. So this is the they raised their voice against the decision of the government. They wanted to save their language, their culture, and they wanted to create a separate Odisha province, especially the area which will consist of the Odia speaking people. In July 1901, the leading persons of Sambalpur met Andrew Fraser, the chief commissioner of central provinces, and suggested him that if it was not possible to retain Odia language in Sambalpur on account of its being a part of central provinces, the district should be transferred to the Odisha division.
तो 1901 जुलाई मसरे संबलपुर समस्त ओडिया माने से माने गोटे सॉल्यूशन बाहर कले दे गिव ए सॉल्यूशन टू द गवर्नमेंट दैट if the government is facing problems in Odia language, then they should transfer the Odisha that area, Sambalpur area to Odisha division, as it is a part of central province. Sambalpur जेहेतु केंद्रीय प्रदेश एक अंश भाव में रही ओडिशा को भाग भाग करे सब प्रेसिडेंट सहित मिसा जाइतिला, तो संबलपुर केंद्रीय प्रदेश अधीन रही जोटा कि हिंदी भाषाभाषी अंचल से हिंदी भाषाभाषी ऑफिसर मान नियुक्ति करा जाउथिला। तो से माने जदि ओडिया भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज करा जाय न पारिबो ताहले संबलपुर को केंद्रीय प्रदेश रु बाद दिया जाय ताको ओडिशा डिवीजन सहित मिसई दिया जाऊ, जहाँ फल कि ये जो समस्या आसूची तार समाधान हो जिवो। दे प्रोवाइडेड द सॉल्यूशन टू एंड्रू फ्रेजर इन अगस्त 1901 a deputation of eminent persons of Sambalpur also tried to meet the Viceroy Lord Curzon at Simla to put forth this demand. Then eminent persons जो व्यक्ति माने से मुख्य व्यक्ति माने प्रमुख भूमिका ग्रहण करथिले से माने वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन को जाई साक्षात करने चेष्टा कले एवं तांकर दाबी उपस्थापन करबा को चाहिए। एंड लॉर्ड कर्जन ही also supported him, Lord Curzon also supported to form a separate Odisha province so that Odia language will save and there will be the separate Odisha province which will come into this in future. The agitation of the Sambalpur people was strongly supported by the people in the coastal Odisha. Then Utkal Sabha submitted a memorial to the Viceroy Lord Elgin against the decision of the central province government. The government of India realized the genuineness of the demand of the Sambalpur people. Odia language was restored in Sambalpur with effect from 1st January 1903. तो उत्कल सभा मध्य वाइसरॉय लॉर्ड एल्जिन को सेंट्रल प्रोविंस गवर्नमेंट रे किपरि भाव रे संबलपुर रे ओडिया भाषा को गुरुत्व दिया जब से विषय मध्य से माने प्रयास करथिले तांकर चेष्टा करथिले किपरि भाव ओडिया भाषा को सेठारे बंचई रखा जिवो। द संबलपुर लोक माने मध्य जो आंदोलन करथिले भाषा निज भाषा को सुरक्षा देबे ओडिया भाषा को सुरक्षा देबे हमर कोस्टल ओडिसा रे जते सब अंचल था जमति कि कटक हो पुरी हो समस्त समर्थन तक पूर्ण समर्थन प्रदान करथिले किपरि संबलपुर रे ओडिया भाषा बंचे। तो देन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रियलाइज्ड द जेन्युइननेस ऑफ द डिमांड ऑफ द संबलपुर पीपल। संबलपुर जनसाधारण को दाबी को जुक्तियुक्त मने करी सेठारे ओडिया भाषा को रिस्टोर करा दैट ओडिया लैंग्वेज वाज रिस्टोर्ड at Sambalpur and that was with effect from 1st January 1903 1903 मसीहा जनवरी 1 रु ओडिया भाषा को स्वीकृति प्रदान करा गला संबलपुर रे। तो दैट वाज ए ग्रेट विक्ट्री ऑफ एवरी ओडिया एंड it was also a great victory for the Odians to establish a separate Odisha province in future. In 1902 the Odias of Ganjam they sent a memorial signed by large number of people to the Viceroy Lord Curzon suggesting the unification of Ganjam, Sambalpur and the Odisha division of the Bengal presidency under one government and one university. In 1902 the Odia people they tried their level best how to form a separate Odisha province by amalgamating different areas of Odisha like Ganjam, then Sambalpur and other areas which are under the Bengal presidency, Madras presidency, central provinces. They should be amalgamated and a separate province should be formed and there should be one government in Odisha division and one university should be established in Odisha so that one type of education should be imparted to the students of Odia people or Odia. So, early in 1903 at Rambha on the seashore of Chilika, some people met under the chairmanship of the Raja of Khalikot and formed the Ganjam Jatiya Samiti or Ganjam National Association. So, Ganjam tried their level best how to amalgamate in Odisha division, how to restore their language. So, they formed an association which was known as
the Ganjam Jatiya Samiti or Ganjam National Association in 1903. In April 1903, a conference was held at Berhampur under the chairmanship of Shyamsundar Raiguru. This conference, which was attended by delegates from all parts of Odisha, Cuttack, Puri, Baleshwar and Sambalpur, resolved that the proceedings of the Odia National Conference should be recorded and that the national conference should be held annually. So, in April 1903, a conference was held at Berhampur, in where the delegates from all over Odisha they joined and in that conference, and they decided that annually they will have the conferences and they will note down every proceedings, and which will help them in future how to prepare to form a separate province in which they should have rights, they should have the opportunities to have jobs in government offices. So, they tried the level best to form a conference. Then we will discuss about the Risley Circular. Lord Curzon's government drew up a plan for the addition of Sambalpur and its adjoining feudatory states, Ganjam district and the Ganjam and Vijayapatanam agencies to the Odisha division. Early in December 1903, the plan was circulated among the governments of central provinces, Madras and Bengal for eliciting their opinions. This plan is known as Risley Circular, being circulated by Henry Herbert Risley, the secretary to the government of India. तो भारत सरकार जो सचिव द सेक्रेटरी जो सचिव नियुक्ति पाई रिजली से गोटे योजना प्रस्तुत करते व्हिच इज नोन एज द रिजली सर्कुलर. एथिरे मुख्य ओडिशावासी को किपर गोटे स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन कर गंजाम डिस्ट्रिक्ट देन विशाखापट्टनम ए सबु अंचल को लेकिन से किपर भाव में एक स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन करेंगे जो पदक्षेप से नवा चाहूले यह अत्यंत सहायक होता रिजली सर्कुलर. In pursuance of the Berhampur resolution, the first Odia National Conference was held at Cuttack on 30 and 31st December 1903 through the efforts of Madhusudan Das, Rajendra Narayan Bhanjdev, the Jamindar of Kanika, and Sri Ram Chandra Bhanjdev, the Maharaja of Mayurbhanj. The conference met under the chairmanship of the Maharaja of Mayurbhanj and was attended by delegates from all parts of Odisha, some Europeans, lawyers, जमींदार्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड स्टूडेंट्स. तो ये उत्कल सम्मिलनी ओडिशा प्रदेश गठन रे प्रमुख भूमिका रही. उत्कल सम्मिलनी मधुसूदन दास का प्रतिष्ठा करा 30-31 डिसेम्बर 1903 मसीह. एथिरे बहु महान व्यक्ति माने अंशग्रहण करथिले उत्कल सम्मिलनी रे. विभिन्न यूरोपियंस माने मध्य अंशग्रहण करथिले, लॉयर्स माने मध्य अंशग्रहण करथिले, विभिन्न प्रकार विभिन्न जमीदार माने, छात्र छात्री माने एथिरे समस्तଙ୍କର भूमिका अतुलनीय थिला. तो ये जो उत्कल सम्मिलनी गठन हेबा जोगु ओडिशा प्रदेश गठन बहुत सरल हो जाइतिला. एवं मधुसूदन दास, राजेंद्र नारायण भंजदेव, श्रीरामचंद्र भंजदेव एमाने एथिरे प्रमुख भूमिका ग्रहण करथिले. दीज आर द ग्रेट पर्सन्स हु प्लेड अ वाइटल रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ ओडिशा प्रोविंस एंड ड्यू टू देयर एफर्ट it was possible to form a separate province of Odia people and to save Odia language, and they also tried their level best for the all round development of Odisha, for the development of education, for the development of economy, etc. So, Utkal Union Conference also tried its level best to develop industry of Odisha, like the cottage industry. Cottage industry of Odisha was developed due to the effort of Utkal Union Conference, Utkal Sammilani. The conference accepted the scheme of the unification of Odia tracts as suggested in the Risley Circular. So, Risley Circular, it provided a plan how to form the all Odia tract, Odia speaking people's tract into one region, and the conference laid down the foundation of a truly Odia national organization called Utkal Sammilani or Utkal Union Conference. Hereafter, under the leadership of
Madhusudan Das, the Utkal Samilani continued to meet year after year in different places in Odisha. The Utkala Samilani ओडिशार विभिन्न स्थान रे प्रति वर्ष अनुष्ठित होबाकू लागिला। एथिरे विभिन्न आंचलिक समस्या, जातीय समस्या सबकिछि आलोचना करा जाउथिला उत्कल सभारे। किपरि भाव ओडिशार अर्थनैतिक समृद्धि हेबो बा अर्थनैतिक विकास हेबो, ओडिशार लोक माने किपरि भाव अधिक अधिक शिक्षा लाभ करि पारिबे, ओडिशार विभिन्न समस्या को किपरि समाधान करा जाई पारिबो, एपरिकी जातीय समस्या जहाँकि ओडिया भाषाभाषी लोक प्रभावित करुला। जातीय समस्या मध्य से आलोचना करते। दे ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट द नेशनल प्रॉब्लम्स एंड रीजनल प्रॉब्लम्स इन द उत्कल यूनियन कॉन्फ्रेंस एंड प्रकृत रे एही जो अनुष्ठान ऑर्गेनाइजेशन गठन करागला उत्कल सभा ताहा ओडिशार विकास पई कार्य करिथिला। दैट वर्क फॉर द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ओडिशा। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव of Utkal Samilani was the merger of Odia speaking tracts. तले उत्कल सम्मेलन रो मुख्य उद्देश्य रहिथिला जेते सब ओडिया भाषाभाषी अंचल विभिन्न प्रदेश रे मिसिकी रहिचंती, जेपर कि मद्रास प्रेसिडेंसी, केंद्रीय प्रदेश, सेंट्रल प्रोविंस, बेंगल प्रेसिडेंसी, ए सबु अंचल रे जेते सब ओडिया भाषाभाषी अंचल ओडिया भाषाभाषी लोक माने बस करूछंती समस्त को किपरि भाव में एकाठी करा जाई एक स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन करा जिवो। माने हाउ टू मर्ज ऑल द ओडिया स्पीकिंग ट्रैक्ट्स, ओडिया भाषाभाषी अंचल को एकत्रित करी ताको एक स्वतंत्र मान्यता प्रदान करा जिवो, एक प्रदेश रो मान्यता प्रदान करा जिवो। एहा थिला उत्कल सम्मेलनी गठन रो मूल लक्ष्य। दिस इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द उत्कल यूनियन कॉन्फ्रेंस इज टू फॉर्म अ सेपरेट प्रोविंस ऑफ ओडिया स्पीकिंग पीपल, to merge the Odia speaking tracts or Odia speaking areas. But the Samilani also concerned itself with the all round development of Odias and to took up such issues as industrial development, spread of education, revival of cottage industries, social reforms, establishment of separate university for Odisha, development of agriculture and development of Odia language and literature. So, these are the main areas which should be focused through the Utkal Samilani or Utkal Union Conference focused on all round development of Odia people, how to develop their education. So, that it demanded that one university should be established in Odisha province or in Odisha division, a special university, one type of education should be provided to the people of Odisha. And they tried the level best to develop the agriculture, as Odias are the main chief occupation of every Odia is agriculture. During that period, the agriculture was the chief source of income. So, that they tried the level best how to develop their agriculture, and social reforms were also introduced by the Utkal Union Conference. Although it was working regionally, but it also discussed all the national problems which had impact on their life. जेहेतु जातीय समस्या गुड़िक ओडिया मान को प्रभावित करुला, ओडिया भाषाभाषी लोक मान विभिन्न समस्यार सम्मुखीन कराउथिला. सो एवरी टाइप ऑफ problems were discussed in the forum of Utkal Union Conference, and all the members of Utkal Union Conference, they focused on the development of every Odia. They wanted to develop the cottage industry. से माने चाहिए कुटीर शिल्पर किपर विकास हो पार, जेहेतु कुटीर शिल्पर विकास हो पार ना से समय रे उत्कल सम्मेलनी तार प्रचेषा करथिला किपरि भाव में कुटीर शिल्पर विकास हेले ओडिया लोकंकर आर्थिक स्थिति अधिक मजबूत हेबो, से माने अर्थनीति क्षेत्र में समृद्ध हो पारिबे, सेथिपई तांकर मध्ये प्रचेष्टा थिला. सो देयर आर सो मेनी इश्यूज वे आर टेकन ऑफ बाय द उत्कल यूनियन कॉन्फ्रेंस इन ऑर्डर टू develop the Odia people. The Utkal Samilani was loyalistic. It always began its session by paying tributes to the British Crown and Viceroy. It was an elitist organization comprising rajas, zamindars and gentry.
Its claim to represent Odisha as a nation cannot be denied because it aimed at unifying Odia tracts and promoting the all-round development of Odisha. The princes and zamindars who dominated the Sammelani were bound up with the common masses by the ties of language, religion and social custom. तो उत्कल सम्मेलन तार विश्वस्तता प्रदान सब प्रदर्शन करुला इंग्रेज मान प्रति तार विश्वास थिला जे इंग्रेज सरकार प्रत्येक क्षेत्र में न्याय प्रदान कर इंग्रेज माने ही सुशासन प्रदान करुवा सुशासन प्रचलन कर तो से चेष्टा थिला जेहेतु उत्कल यूनियन कॉन्फ्रेंस सदस्य माने समस्ते हायर सोसाइटी थिले दे आर आरिस्टोक्रेटिक पर्सन्स जमीदार्स माने राजा माने एवं शिक्षित लोक माने यार सदस्य थिले उत्कल सम्मेलन से माने चेष्टा करुथिले सर्वदा इंग्रेज मानकर हेल्प बा सेमानकर पॉजिटिव नेस को से माने देखुथिले सब बेले दे always looked at the positive side of the British government and they had the belief that with their help they will form the Odisha province or they will merge the all Odia speaking tracts into one province. तो जमीदार माने प्रिंसेस माने एवं समस्त किंतु सेमानक भितरे साधारण जनता भितरे एवं राजा जमीदार एवं एलिटेस्ट मान भितरे संपर्क गोटे रही से माने कौन गोटे संपर्क थिला जोटा कि भाषा ओडिया भाषा दे हैड द रिलेशन विथ द मासेस थ्रू द लैंग्वेज भाषा माध्यम एवं प्रथा परंपरा जहाँ कस्टम्स थिला ओडिया मानकर कस्टम से मानकर संपर्क रही दे हैड द रिलेशनशिप विथ द ओडिया मासेस by observing different festivals when they observed the different rituals जेते सब प्रथा परंपरा सब पालन करा जाउथिला जमीदार माने राजा माने एवं शिक्षित वर्गर लोक माने समस्ते साधारण जनता सहित से माने जड़ित रहउथिले दे हैड द रिलेशनशिप विथ द मासेस एंड धर्म आमर ओडिया भाषार विभिन्न ओडिया धर्म रे बहुत किछि पालन करा जाय से सब मध्य तांको जोड़ी की रखिथिला so they had the bonding due to the language ओडिया language so ओडिया language बा ओडिया भाषा समस्त को एकत्रित करिबा बांधी की रखिथिला एवं ओडिया प्रथा परंपरा प्रत्येक क्षेत्र रे जेते सब धनी श्रेणी लोक मानकु साधारण जनता सहित से मानको बदरे संपर्क को जड़ित करी रखिथिला. Initially 389 branches were organized by 15 paid missionaries not only in Odisha division but also in Midnapur, Calcutta, Ganjam, Sambalpur and Princely states. तो प्रारंभिक पर्यायर कौन करा उत्कल सम्मेलन विभिन्न शाखा सब प्रतिष्ठा करा ओडिशार विभिन्न स्थान रे से माने मेदिनापुर रे कलिकता रे गंजाम संबलपुर विभिन्न देशीय राजा मानकर अंचल रे सब स्थान रे से माने उत्कल सभा धीरे धीरे से माने शाखा सब प्रतिष्ठा कले एंड ऑन द होल उत्कल सम्मेलनी failed to be a mass organization. It remained confined to the elite and Madhusudan Das remained its guiding spirit all through. तो जिते समय उत्कल सम्मेलन कार्य करिथिला ओडिशा को एक स्वतंत्र प्रदेश मान्यता प्रदान करिबारे एहर भूमिका बहुत गुरुत्वपूर्ण थिला. एहा एक गण संघ रे नथिला एहा गण संघ नथिला. दैट वाज नॉट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मासेस. इट वाज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सम सिलेक्टेड पीपल्स. किछि लोकन को नै कि एहा जो कि मधुसूदन दास जहा को तांकर नेतृत्व प्रदान करथिले तांकर उपदेष्टा थिले. ही ऑलवेज एडवाइज्ड द बेस्ट टू द उत्कल सम्मेलनी. whenever they faced any problem Madhusudan Das had solved those problems. So Madhusudan Das तांकर गाइडिंग स्पिरिट थिले जे पर्यंत उत्कल सम्मेलनी कार्य करथिला मधुसूदन दास कर तत्वावधान रे कार्य करुथिला एवं किछि सिलेक्टेड लोक मानकु नै बा धनी श्रेणी रो राजा जमीदार मानकु लोक मानकु नै कि उत्कल सम्मेलन जो प्रतिष्ठा करा जायथिला ताहा जोगु बस से माने इंग्रेज मानक सहायता नै ओडिशा प्रदेश गठन करिबारे सफलता लाभ करथिले. सो रिजली सर्कुलर एंड द ट्रांसफर ऑफ संबलपुर टू ओडिशा. हाउ रिजली सर्कुलर वाज हेल्पफुल फॉर द formation or for the transfer of Sambalpur into Odisha division. Governments of Bengal, central provinces and Madras expressed their opinions on the Risley circular. The Lieutenant Governor of Bengal gave strong support to it. The Chief Commissioner of central provinces supported the transfer of Sambalpur and its adjoining feudatory states Sonpur, Bamra, Patna,
then Kalahandi and Redhakol to the Odisha division. But Lord Amthil, the governor of Madras, opposed the transfer of Ganjam and Vijakhapatnam to Odisha. तो बंगर सरकार केंद्र प्रदेश सरकार मद्रास प्रेसिडेंसी जो मुख्य थिले तो समस्ते रिजली सर्कुलर जो प्लान देथिले जो योजना करथिले ताकू से माने समस्ते दे हैड गिवन देयर ओपिनियंस द लेफ्टिनेंट बंगर जे लेफ्टिनेंट गवर्नर थिले से मध्य को तांकर पूर्ण समर्थन प्रदान कले सेंट्रल प्रोविंस जे चीफ कमिशनर थिले से मध्य संबलपुर एवं तार आखपाख अंचल जोटा कि ओडिया भाषाभाषी अंचल थिला सोनपुर बामरा पाटना कलाहांडी एवं रेढ़ाकोल ताकू मध्य ओडिशा डिवीजन सहित मिसेबा मध्य से तांकर स्वीकृति प्रदान कले किंतु जे मद्रास प्रेसिडेंसी जे गवर्नर थिले लॉर्ड आमथिल से यही प्रस्ताव को से ग्रहण करन थिले एंड ही वाज अगेंस्ट द अमालगमेशन ऑफ गंजाम टू ओडिशा डिवीजन से ओडिशा सहित गंजाम मिश्रण को विरोध करिथिले ही वाज नॉट इन फेवर ऑफ द अमालगमेशन ऑफ गंजाम एंड विजयपट्टनम टू द ओडिशा डिवीजन ओडिशा सहित यही दुई अंचल गंजाम एवं विजयपट्टनम को मिसेबा से तार समर्थन प्रदान करि नथिले. So another obstacle to the transfer of Ganjam to Odisha division came from Sir Andrew Fraser, the Lieutenant Governor of Bengal. Though Fraser had earlier supported the Risley Circular, subsequently differed from it. Unfortunately for Odisha, Lord Curzon, who was favorably inclined to the cause of Odias, went on leave in April 1904, and Lord Amthil became acting Governor General, and the plan of transfer of Ganjam was dropped. गंजाम भाषाभाषी अंचल लोक मैंने ओडिया भाषाभाषी अंचल लोक मैंने जो मैंने गंजाम अवस्थान करते से माने चाहूले किपरि भाव में ओडिशा डिवीजन सहित से अंचल मिश्रण हेब किंतु ताहा एते सहज नथिला. लॉर्ड आमथिल से तो विरोध करुथिले ता सहित एंड्रू फ्रेजर जी के पूर्वर समर्थन करुथिले किपरि भाव में ओडिशा डिवीजन सहित गंजाम मिश्रण हो जाऊ से वर्तमान मध्य तांकर जो मत प्रदान ताकू मध्य से मत बदल कर देथिले एंड he had supported Ridley Circular, but now he deferred from it. से बर्तमान मत परिवर्तन करदेले एवं लॉर्ड कर्जन जे कि ओडिशा को एक स्वतंत्र प्रदेश गठन करबा पई तांकर पूर्ण समर्थन प्रदान करथिले. लॉर्ड कर्जन मध्ये ओडिया मानक प्रति तांकर सहृदयता थिला से ओडिया भाषाभाषी अंचल एकत्रित करबा पई युक्तियुक्त बोली भाभी थिले. से 1904 मसीह से एप्रिल से स्थान परित्याग कर कौन है ना दैट ऑल्सो क्रिएटेड प्रॉब्लम. लॉर्ड आमथिल ही बिकेम द एक्टिंग गवर्नर जनरल. लॉर्ड आमथिल वर्तमान जी की संपूर्ण विरोध करते वर्तमान से गवर्नर जनरल भाव में कार्य कले एवं गंजाम को ओडिशा डिवीजन में मिसेबार जो योजना थिला ताहाकू से माने ड्रॉप दैट वाज ड्रॉप्ड ता बंद हो गला. The transfer of Sambalpur district and its adjoining feudatory states Patna, Kalahandi, Sonpur, Bamra and Rerakol to the Odisha division took place with effect from 16 October 1905. ताहले संबलपुर एवं तार संलग्न अंचल पाटना कलाहांडी सोनपुर बामरा ये सब ओडिशा डिवीजन सहित मिसीगला जहाँ कि आमर ओडिशा ओडिया मानक एक विजय थिला जे हाउ द संबलपुर ट्रैक्ट वाज merged with the Odisha division. Then there was the formation of the province of Bihar and Odisha. Bihar एवं ओडिशा प्रदेश गठन है तापर किपरि भाव में ओडिशा को जदियो से माने चाहूले एक स्वतंत्र प्रदेश गठन करने बट फर्स्ट इट वाज फॉर्म्ड एज बिहार एंड ओडिशा प्रोविंस. ओडिशा वाज नॉट फॉर्म्ड एज अ सेपरेट प्रोविंस बट इट वाज फॉर्म्ड with taking the areas or the Odia speaking areas, but it was formed as the Bihar and Odisha province. In 1911, while annulling the partition of Bengal made in 1905, the British government decided to create the new province of Bihar and Odisha, of which was to include Bihar, Chotnagpur division and Odisha division. This decision was rescinded in Odisha. Lord Curzon criticized the creation of province of Bihar and Odisha. ओडिया लोक मानकर दाबी थिला एक स्वतंत्र प्रदेश गठन करा जाऊ.
सेमाने मध्य प्रशंसा कर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जेहेतु प्रचलन करा जाइथिला इंडिया रे तो सेमाने चाहुथिले किपर एक स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन करा जिवो ओडिया भाषा भाषी अंचल को एकत्रित करा जिवो किंतु तबेले ओडिशा बिहार प्रदेश गठन करा गला ओडिया भाषा भाषी प्रति शक्त धक्का लागिथिला द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइड स्थिर कले जे ओडिशा बिहार प्रदेश गठन करा जिवो जोथरे कि बिहार छोटनागपुर डिवीजन एवं ओडिशा डिवीजन तीन मिसिकी रहिबे सो दिस डिसीजन ये जो डिसीजन को लॉर्ड कर्जन मध्य विरोध करले एवं तांको मत थिला जदि यह गठन करा जिवो बा बिहार ओडिशा प्रदेश गठन करा जिवो ओडिशा रे लोक मानकर विद्रोहर स्वर उठिबो द प्रोविंस ऑफ बिहार एंड ओडिशा वाज इनागुरेटेड ऑन 1 April 1912 द ओडिशा डिवीजन इन दिस न्यू प्रोविंस कंसिस्टेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अनुगुल बालेश्वर कटक पुरी एंड संबलपुर जेते बेले ओडिशा बिहार प्रदेश गठन करा गला ओडिशा को एक स्वतंत्र अंचल भाव में ओडिशा को स्वतंत्र अंचल भाव आत्मप्रकाश कला बा ओडिशा प्रदेश कहा क्यों क्यों अंचल को नहीं गठित है ओडिशा डिवीजन अनुगुल बालेश्वर कटक पुरी एवं संबलपुर यही अंचल को नहीं ओडिशा डिवीजन गठन कराला एवं बिहार एवं छोटनागपुर डिवीजन सहित ओडिशा प्रदेश को मिसई ओडिशा बिहार प्रदेश गठन करागला जोटा 1912 1 एप्रिल रे ताको इनागुरेट कर तार शुभ उद्घाटन करागला जो बिहार ओडिशा प्रोविंस देन सम जमींदार्स ऑफ साउथ ओडिशा such as the Raja of Manjusa, the Raja of Chikiti and the Raja of Khalikot, the Raja of Dharakot, they played active roles in the Ganjam agitation for the transfer of their district to Odisha. बर्तमान गंजाम रे ओडिया भाषाभाषी अंचल माने किपरि भाबरे गंजाम को ओडिशा सहित मिसई दिया जिवो एवं सेमान को ओडिशा डिवीजन कोना जिवो सेति पय सेमाने विद्रोहर स्वर उत्तोलन कले दे ट्राइड देयर लेवल बेस्ट हाउ टू फॉर्म और हाउ टू अमालगमेट गंजाम इनटू ओडिशा डिवीजन किपरि भाबरे गंजाम को ओडिशा सहित मिश्रण करा जिवो सेमाने स्वर उत्तोलन कले नेतृत्व नहीं सब साउथ ओडिशा दक्षिण ओडिशा जे सब राजा माने थिले मंजूसार राजा चिकिटी देन खलिकोट धराकोट ए सब अंचल राजा माने मुख्य भूमिका ग्रहण करले सेमाने लोक मानक भितरे विद्रोहर स्वर किपरि भाबरे सेमाने विद्रोहर स्वर उत्तोलन करिवे तांको भितरे सेमाने ओडिया जातीयतावाद भरि देथिले बा सेमाने ओडिया भाषा भाषी लोक मानक एकत्रित करी तार नेतृत्व नै किपरि गंजाम को ओडिशा डिवीजन सहित मिसा जिवो सेथिपय सेमाने प्रयास करिथिले इन 1909 a deputation of the Odia Samaj of Ganjam waited upon the governor of Madras and pressed upon him for the transfer of Ganjam and Vijakhapatnam to Odisha. 1909 मसीह गंजाम रो ओडिया समाज से माने मद्रास रो गवर्नर को से माने प्रेशराइज करथिले किपरि भाव तांको ऊपर चाप प्रयोग कले किपरि भाव गंजाम एवं विशाखापट्टनम यही दुई अंचल को ओडिशा डिवीजन सहित मिसा जिवो एवं ओडिशा को एक स्वतंत्र प्रदेश जो मान्यता मिलिबो से माने मध्य ओडिशा अधीन रे रहिथिबे बट दे वांटेड टू मर्ज इन ओडिशा डिवीजन इन डिसेंबर 1913 द ओडिया समाज and landholders association of Ganjam presented memoranda to Lord Pentland the governor of Madras on the occasion of his visit to Berhampur तो 1913 मसीहा अनेक प्रयास कले जे ओडिया समाज आ लैंड जो जमीदार मानकर गोटे एसोसिएशन थिला से माने गंजाम रे से माने कोन दे रिजेंटेड दे प्रेजेंटेड मेमोरेंडा एंड दे आल्सो शोड देयर discontentment against the government's decision and they wanted to merge Ganjam and Vijakhapatnam to Odisha division. Odisha division सहित गंजाम एवं विशाखापट्टनम को मिसाइबा पई एवं सेमान तांकर जो पूर्ण प्रयास थिला ताकू सेमाने 1913 डिसेंबर मासरे सेमान ताकू गोटे मेमोरेंडा माध्यम रे प्रदान कले मद्रास गवर्नर को पेटलैंड को देन agitation in Singhbhum, Saraikala and Kharsua. The Odias of Singhbhum, Saraikala, Kharsua और Singhbhum एही तीनी अंचल रे स्वर उत्तोलन कले ओडिया माने किपरि भाबरे सेही अंचल को ओडिशा डिवीजन सहित मिसा जिवो बीएन मिश्र पंडित कृष्णचंद्र आचार्य का नेतृत्व रे ओडिया माने से माने कोन कले ना एही अंचल सब सराइकला खरसुआ किपरि भाबरे ओडिशा डिवीजन से मिसिबो ता स्वर उत्तोलन करिबार 1916 मसिया रे स्वर उत्तोलन कले
In the 12th session of Utkal Sammilani held in December 1916 at Balashore, a committee of 7 members consisting of Madhusudan Das, then Raja of Kanika, Harihar Panda, Brajasundar Das, Sudam Charan Naik and Raja of Sergarh was constituted for collecting data and carrying on the continuous executive work regarding the unification of Odia speaking territories. तो जितेबाला उत्कल सम्मेलन द्वादश सम्मेलन थिला से समय 1916 मसीह बालेश्वर 7 जन सदस्य गोटे कमिटी गठन करागला से कमिटी रे मधुसूदन दास कनिकार राजा हरिहर पंडा ब्रजसुंदर दास सुदाम चरण नायक एवं शेरगढ़ राजा से माने सदस्य थिले एंड से माने कोन कला डाटा कलेक्शन कले एवं किपरि भाबरे ओडिया भाषाभाषी अंचल को एकत्रित करा जो सेति प्रयास करले. द कमिटी प्रिपेयर्ड ए मेमोरेंडम एंड प्रेजेंटेड इट टू E.S. Montagu and demanded that the Odia speaking tracts as identified by Grierson in Linguistic Survey of India in volume 5 should be united under one administration. पूर्वरु जो सर्वे करा जायथिला तार आधार रे किपरि भाबरे ओडिया भाषाभाषी अंचल को एकत्रित करू सेति से माने मॉन्टेगु चैम्सफोर्ड को निकट तांकर दाबी उपस्थापन करिथिले मॉन्टेगु को निकट रे. So there is no definite provision in the Montagu-Chelmsford report for the amalgamation of Odia speaking tracts, and Utkal Sammilani under the presidency of Madhusudan Das passed a resolution demanding a separate province under a governor in council held at Cuttack in September 1918. Then Sachidananda Sinha resolution, the Sinha resolution. Sachidananda Sinha, a staunch supporter of Odia movement, moved a resolution in 1920 recommending the government of India to formulate a scheme for the amalgamation of Odia speaking tracts. This was famous as Sinha resolution. By this, the central province gave consent to transfer Khariyar Zamindari and Bihar gave a favorable reply. तो Sinha resolution जोगो मध्य बहुत सहायक होता Sinha resolution किपरि भाबरे ओडिशा प्रदेश गठन करा जिवो 1920 मसीह रे. When Madras government was pressurized to hand over Ganjam, Shashi Bhushan Ratha, the editor of Hasa, mobilized the people of Ganjam, and by the pressure of the government of India, Madras government appointed Philip Duff committee in 1924 to look into the matter. So Philip Duff committee गठन करा गला जहाँ फल कि ये जो ओडिया भाषाभाषी अंचल को किपर एकत्रित करा जो मद्रास गवर्नमेंट वाज प्रेशर ताको प्रेशर करा गला. शशि भूषण जे आशार एडिटर थिले से गंजाम लोक मानन को एकत्रित करी तांकर विद्रोह स्वर उत्तोलन कले एवं फिलिप डफ कमिटी गठन कर 1924 मसीह यही विषय आलोचना करने नेतृत्व नहीं. देन द फिलिप डफ कमिटी was formed in 1924 consisting of C.L. Philip, the then political agent of Odisha state, and S.C. Duff, the then collector of Visakhapatnam, visited to survey the public opinion regarding the amalgamation. The committee opined that Mandasa, Tikali, Tarala, Jalanthar, Budar Singh and Parlakhimundi in Ganjam should be included in Odisha. The Simon Commission and Attlee subcommittee was also helpful for the formation of Odisha province. A delegation led by Rajendra Narayan Bhanjdev welcomed the Simon Commission at Patna railway station. By the recommendation of Simon Commission, Attlee subcommittee consisting of C.R. Attlee, Rajendra Narayan Bhanjdev, Dr. S. Suhrawardy and Lakshmidhar Mohanty was formed. The Simon Commission recommended for the formation of a boundary commission when its report was published in 27 May 1930. Then O'Donnell Boundary Commission was formed in 1931. The chairman it was headed by S.P. O'Donnell, and the members were H.M. Mehta of Bombay and T.R. Fokun of Assam. Besides, the associate members of the committee consisted of K.C. Krishna Chandra Gajapati representing the Odias, Sachidananda Sinha representing the Biharis, and C.V.S. Narasimha Raju representing the Telugus. Then following 1931 census and receiving evidence from 400 witnesses, the commission recommended for the creation of a separate Odia province, which would include Odisha division Angul, Padmapur, Khariyar state, the greater part of Ganjam district and Visakhapatnam agency. The new province would have an area of 33,000 square miles and a population of 8,277,000. The Joint Parliamentary Committee under the chairmanship of Lord Lilithgow examined the report of the Boundary Commission and gave consent for the formation of Odisha province, retaining all its recommendations, including Parlakhimundi, Malihas and Jalanthar. Then Habak committee was appointed. The Odisha Administrative Committee or Habak committee was formed, which examined the issue and substituted its final report on 20 December 1933. It made Cuttack the capital of Odisha and Puri its summer resort.
it recommended a High Court, a University for Odisha, the post of Director of Education, Inspector General of Police, Revenue Commissioner, etc., were also recommended by this committee. Then the Government of India Act was promulgated in 1935 and its clause 289 recognized Odisha as a separate province. On 3rd March 1936, the Odisha Act was ratified by the British Parliament and received the signature of the Emperor. On 1st April 1936, Odisha was created as a separate province. So, Odisha Pradesh 1936 मसीहा 1st April गठन करागला. यह आमर महामनीषी मान उद्यम जो संभव है ओडिया भाषा आंदोलन जो संभव हो पारिला. So, in this class we have discussed about the formation of Odisha province. Thank you very much for watching this learning video. Thank you all.